अब हम बात करेंगे reagents and supplies required to perform a microarray। जैसा कि microarray के लिए हमें starting sample जो चाहिए that is cDNA। So we have to prepare the cDNA from the sample। अब sample हमारे पास different नौयत के हो सकते हैं। cell in culture हो सकता है, बैक्टीरियल कल्चर हो सकता है, यूकैरियोटिक सेल कल्चर हो सकते हैं, टिश्यूज हो सकते हैं। फ्रॉम एनी टाइप ऑफ सैंपल, सोर्स सैंपल, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द आरएनए। और प्रिसाइजली अगर कहा जाए, वी हैव टू प्योरीफाई मैसेंजर आरएनए। तो हम इन मेथड्स के हवाले से पहले बात कर चुके हैं कि हमारे पास आरएनए एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सा मेथड है। आरएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैसेंजर आरएनए को पॉली ए टेल एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए प्योरीफाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। वी हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर प्रोटोकॉल एंड दैट पर्टिकुलर मेथड to extract the messenger RNA, to purify the messenger RNA. Once the messenger RNA is purified, the next procedure would be reverse transcription. Reverse transcription के लिए we need to have reverse transcriptase enzyme and we have to perform that particular protocol to get the cDNA prepared, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं earlier. Once the cDNA is available, अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें cDNA लेबल चाहिए Cy3, CY3 और CY5 प्रोटीन के साथ, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेज। So while preparing the cDNA, we need to add these fluorophores in the solution mixer so that the cDNA which we get should be labeled. And once we do the labeling of the cDNA, that cDNA can be used for microarray. अब जैसे कि पहले बात की है कि माइक्रो एरे जो प्रोवाइड किया जाता है दैट कम्स फ्रॉम दी कमर्शियल सोर्स। तो रिसर्चर अपने तौर पे होमवर्क करके रखता है कि मैंने इसमें कौन सा सेट ऑफ जीन्स जो है वो स्टडी करना है। अब सेट ऑफ जीन्स से मुराद क्या है, हम किसी सिग्नलिंग मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, किसी मेटाबॉलिक पाथवे की बात कर लेते हैं, लेट्स सपोज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात कर लेते हैं, वी टॉक अबाउट fat metabolism and so on. So we can get a microarray of our own choice having 20,000 up to 20,000 different spots which will analyze the expression of genes in your cDNA. So once we get the microarray, we can perform that hybridization, washing and scanning. Reagents or buffers ready to use kit for microarray use की जा सकती है, और उससे पहले जितने भी स्टेप्स हैं उनके लिए जो रिएजेंट्स बफर्स हैं दे आर ऑलरेडी डिस्कस्ड। दिस पिक्चर शोज यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो एरेज और जीन चिप्स विच आर कमर्शियली अवेलेबल, और अगर इनको थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए वी कैन हैव एन आइडिया हाउ मेनी सैंपल्स दिस लैब चिप और जीन चिप कैन हैव। इसमें ग्रिड्स हैं, कॉलम्स हैं, और कॉलम और रोज हैं दैट tells us how many samples can be loaded here. Similarly, this is a chip, gene chip, which can comparatively have larger number of samples, and this is a glass slide which shows you the after hybridization how it could appear under the scanner or specific wavelength. अब इस particular gene chip में background में what is present? Look at this picture. We have these grids, some columns and some rows with a defined dimension 1.26 centimeter. In columns में या in boxes में we have different types of probes spotted on it. अब ये spotted probes, basically these are also cDNA molecules or सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स, जिनको हमने अर्लियर एस्टैब्लिश्ड कल्चर में से एम्पलीफाई करके प्योरीफाई करके यहाँ पे स्पॉट किया है। और स्पॉटिंग के बाद वी नो दैट दिस इज आवर स्पॉट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हमारे पास इन स्पॉट्स की एक की मौजूद है कि स्पॉट नंबर 1 पे कौन सा जीन है, स्पॉट नंबर 2 पे कौन सा जीन है, एंड लाइक दिस वी गेट अ कंप्लीट मैप ऑफ दिस माइक्रोचिप। अब इस
पर्टिकुलर पिक्चर को देखा जाए तो एवरी स्पॉट हैज़ अ स्पेसिफिक प्रोब, सिंगल स्पेसिफिक प्रोब. मैं ये नहीं कहूँगा कि सिंगल cDNA मॉलिक्यूल और DNA मॉलिक्यूल होता है. DNA मॉलिक्यूल कैन बी ऑफ मल्टीपल कॉपीज but of the same gene. So we can analyze up to 20,000 spots per slide. Then we need hybridization chamber. चूँकि ग्लास स्लाइड की डायमेंशन बहुत बड़ी नहीं होती, दिस इज़ अ रूटीन साइज्ड ग्लास स्लाइड. सो इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक चैम्बर की ज़रूरत पेश आती है ताकि हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन सोल्यूशन है और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है ये सक्सेसफुली अकम्प्लिश हो सके. This hybridization chamber consists of stainless steel chamber, and if we look at this picture, this one is the chamber with its tightener, and this is the backing slide that is disposable and is made up of silicon, and this is how we can place this slide over here. And in the next slide it shows the arrangement of different parts of the chamber. We have a chamber fastener, then we have a chamber top, DNA microarray. It should be face down because हमारा जो cDNA है that is going to be present in this gasket. This gasket is going to seal this DNA microarray, and once we assemble this chamber, then we are ready to move further for placing it in the hybridization oven. Hybridization oven is an oven that can vary with have a range of temperature, but it has a specific holder in it so that the hybridization chamber can properly be placed and can properly be rotated so that every cDNA molecule can get chance to bind to its complementary DNA strand. Then once this hybridization process is completed, washing step is done, we need this microarray scanner that is a laser induced scanner and is going to be used to place this microarray in it using the laser beams at specific wavelengths. This scanner scans the microarray and generates the data that is going to be interpreted later on by the experts.